Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 11, Indian Judiciary. This is a part of your civic section, okay? Previously we have studied about the legislature and executive parts of government, okay? Indian government is divided into three parts. We have studied that it is legislative, executive, and third is judiciary. So first two we have studied earlier, and now we are going to study about the third part, that is Indian judiciary. Chapter number 11, Indian Judiciary. We have studied in detail about two organs of government, that is the legislative and the executive. Now we shall study in detail about the third organ of the government, that is judiciary, which is the independent, statutory and impartial organ of government. Yes, it is impartial of the organ of the government. It cannot be partial because if something is happening wrong in the legislative or executive, who will take the action? For that, the third organ of government, that is judiciary, works. The Constitution of India provides for a systematic, organized, and uniform judicial system throughout India. The Indian judicial system is in the form of pyramid hierarchy. We have studied a uniform judiciary, and in it at the top level is Supreme Court, which is apex court, मतलब main court है, okay. At the middle level there is a High Court, and under their jurisdiction comes District Court at district level and Taluka Court at Taluka level. So there are local and special courts also. Apart from this, there are trial courts and tribunals which are established to cater the various objectives. Okay, so tribunals भी बनाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए tribunals बनाए जाते हैं, who will work for that particular field only. So this is a picture, or you can say diagram, how our judicial system works. सबसे नीचे आते हैं ट्रायल कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लस तालुका कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट एंड सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट. ओके, द डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज फुल एंड फाइनल. नो वन कैन चैलेंज द डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट. Next comes importance of judiciary. Why judiciary is important? A neutral and impartial judiciary is essential in the federal system for the protection and preservation of rights of the Indian citizen and to solve any incongruity between the state and state or between one state and another state regarding the division of workload. Okay, confusion you can say. अगर कोई confusion है या कोई मतभेद हो तो वो कौन सॉल्व कर सकता है? जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी. The judiciary is an important organ as to interpret the constitutionality of any provision of law so that the supremacy of the constitution prevails. Yes, क्यों important है? To interpret constitutionality of any provision of any law. कोई भी लॉ बनाते हैं तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे मैच कर रहा है. इट इज़ नॉट अबाइडिंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स. ओके, रूल्स को तोड़ के लॉ नहीं बना गया, उसका ध्यान कौन रखेगा? Indian judiciary. In order that the legislature or the executive do not violate any of the constitutional limitation are required in the country, independent, firm, impartial and fearless judiciary which is the foundation of democracy. See, ये बहुत ही important statement है, foundation of democracy. If a judiciary impartial होनी चाहिए, fearless होने चाहिए. अगर वो गवर्नमेंट से डर के अपना decision change कर दे, then none of the citizen of our country can get proper justice. Okay, the objective of constitution is to see that the judiciary process there is no flow or delay and citizens get quick, cheap and equal justice. In the presence of alert legislature and executive, judiciary would always remain active, but many a times due to administrative inactiveness and irresponsibility of the executive and authoritativeness of the legislature. सी ने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया अथॉरिटेटिवनेस, इन द सेंस द गवर्नमेंट जिसकी है वो अपने फ़ायदे के हिसाब से अथॉरिटी हाथ में ले लेती है, टेक डिसीजंस एज पर देयर बेनिफिट्स. सो लेजिस्लेचर इम्पार्शियल, कॉग्निजेंट मतलब नॉलेजेबल, इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस जुडिशरी हैज़ शोन जुडिशियल इनएक्टिवनेस. कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रेशर जुडिशरी जो उसको इम्पार्शियल, बाद में नॉलेजेबल, दैन इंडिपेंडेंट और फियरलेस तरीके से काम करना होता है वो कर पाते हैं नहीं. नेक्स्ट कम्स अपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, द मेन कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी. As per the Constitution of India,
It is the topmost judicial organization. It is situated in Delhi. All the civil and criminal courts of India have to work under the jurisdiction of Supreme Court. मतलब they cannot form their own laws. Okay, सबको जो laws सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं या जो laws हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उसके बाइंडिंग, उसके बाउंड्री में ही काम करना है. The Supreme Court consists of one Chief Justice and 28 additional judge. Okay, so including Supreme Court के main justice and 28, there comes 29, but latest is 31. Okay, this book is old one, but the latest number of Supreme Court judge including the Supreme Court is 31. The Chief Justice of Supreme Court is appointed by the President of India. The number of judges in Supreme Court is decided by the Parliament, and if the President feels that the workload of Supreme Court is increased, then the President can appoint additional ad hoc judge to the Supreme Court as per the provision of the Constitution. Ad hoc मतलब तत्पूर्ता, આપણે જે ગુજરાતીમાં કહે ને તત્પૂરતું, मतलब अभी रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं. The judges in the higher Supreme Court are appointed on the basis of seniority. Except for the Chief Justice of Supreme Court, all other judges are appointed in consultation with the Chief Justice as well as other senior judges. Yes, Chief Justice को छोड़ के बाकी सब उनके ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए कंसल्ट करते हुए अपॉइंट किए जाते हैं. चीफ जस्टिस तो कौन अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. So except the Chief Justice of India, rest judges of Supreme Court are appointed with the consultation of Chief Justice. Qualification. Okay, now what are the qualifications required to be a judge of Supreme Court? First, he should be a citizen of India. Second, should have provided a service of at least 5 years as a judge in any of the High Court of India. 5 साल तक उन्होंने किसी हाई कोर्ट में जज तरीके का काम किया होना चाहिए. Then should have experience of at least 10 years as an advocate in any of the court of India. Just a minute. Yes, should have experience of at least 10 years as an advocate in any of the High Court of India. उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट, प्लस 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, सो ओवरऑल 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हाई कोर्ट. Should be a distinguished judge or a famous jurist as per the opinion of the President. Should not be more than 65 years of age. Should not be of more than 65 years of age. Okay, so these are the things which are required to become a judge of Supreme Court. Yes, so next comes time period. The retirement age is 65 years for the judge of Supreme Court. However, the change in the age of retirement can be made by the Parliament through framing a law. They cannot carry the practice of law in any of the Indian courts, but they can provide their service in committees appointed to investigate into uncommon situations or event. Yes, वो अपनी सर्विस एज अ जज तो नहीं दे सकते, बट बाद में इफ़ यू नो नंबर ऑफ टाइम्स कमेटी रचाई जाती है किसी भी काम के लिए. ओके, गंगा रिवर प्यूरिफिकेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी, देन नंबर ऑफ थिंग्स के लिए कमेटी बनाई जाती है, देन दिस जजेस कैन वर्क इन दैट कमिटीज़. If incapable to carry out their duties before the time of retirement, then under such circumstances they can resign willingly from their post by tendering written resignation to the President. Okay, अगर willingly वो resign करना चाहते हैं before retirement age, then they can do so by submitting that resignation to President. But the judges can be removed from their post and power if they are found to be guilty of incapability, misconduct or inefficiency. This removal is in accordance with the provision of the Constitution and is carried out through impeachment motion in Parliament. The process for it is as the follows. Every House of Parliament has to submit a memorandum having majority support to the President of the total number of members and at least 2/3 numbers of members present in the respective session. Based on the presentation by the order of the President, the judge can be removed from his post. Yes, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना दैट इज़ नॉट दैट इज़ ए टास्क. ओके, उनके पास भी अपने पावर्स होते हैं. सो इफ एट ऑल उन्होंने विलिंगली उनको रिज़ाइन कराएं, दैन ही और शी कैन डू. सेकेंड थिंग इज़ इफ एट ऑल उनको रिमूव करना है, देन बोथ द पार्लियामेंट के जो लेजिस्लेटिव होते हैं उनको दे हैव टू गिव अ रिटन लेटर टू द प्रेसिडेंट and with the 2/3 majority.
इफ़ द टू थर्ड मेजोरिटी, और उनके पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए फॉर द मिसकंडक्ट और इनकेपेबिलिटी के लिए उनके पास प्रूफ होना चाहिए. The Parliament monitors the presentation of memorandum regarding the misbehavior of judge and conducting an investigation as well as conducting a proof of the same. See, as I told you, there must be a proof. Otherwise, you cannot do same for the thing with the Chief Justice. The concerned judge is given opportunity to present his narration in his self-defense in the Parliament. Yes, the concerned judge is given an opportunity to present his narration in self-defense in the Parliament. अब उनका केस कौन लड़ेगा? ओके, वो मतलब वो पूरे इंडिया के केस देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, he will look after the every case of India, not every case, but if at all there is something, his judgment is final. But if at all something is done wrong by him, then who will see the thing? So उसके लिए अरेंजमेंट की गई है कि दोनों मतलब पार्लियामेंट के सेशन में सभी लेजिस्लेटिव उनके केस को देखेंगे, उनको चांस देंगे अपनी सफाई देने का. And whatever decision given by them will be given to president and it will be considered as final. Next comes the President of India administers the oath of secrecy and loyalty towards the Constitution to the judge who appoints the Supreme Court. Before taking the charge of that post, the judge are required to take the oath in oral as well as sign the pledge. जैसे बोलते हैं ना, जज भी जब भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं then they have to take the oath. और उनको कौन oath दिलवाते हैं? The president. In the same way, judges are bound to take oath both in oral and have to sign the pledge in the presence of president. Yes, now next comes original jurisdiction. Okay, now just a minute. Okay, so there are three types of jurisdiction which a Supreme Court possesses. Among them, the first is original jurisdiction. When a court has a power to directly give judgment after hearing a case, such a power is known as original jurisdiction, and the Supreme Court has a power to make the decision regarding the case, which no other court has. Yes, आफ्टर हियरिंग ए केस, डायरेक्ट जजमेंट, मतलब केस ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए ना हाई कोर्ट में गए, डायरेक्ट वो केस कहाँ पे गए? सुप्रीम कोर्ट के पास गए. केस उन्होंने देखा, उन्होंने सुना और उन्होंने डिसीजन दिया. दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुडिक्शन. अंडर दिस जुडिक्शन द फॉलोइंग पार्टी शुड बी इन्वॉल्व हुज कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट. अब इसमें कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं? इफ मेरा कोई केस है, आपका कोई केस होगा, देन इट विल नॉट गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, बट देर आर सम ऑफ द केसेस जहाँ पे हाई कोर्ट लेवल पे काम हो सकता है. नहीं, व्हेन इट इज सो, इट हैज़ द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट. येस, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो केस कहाँ पे जाएगा? इट विल गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट. ओके, सेकेंड, it has power to resolving difference of opinion, fights or conflict between the government of India and one or more state on the one side and one or more on other side. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दो ग्रुप ऑफ स्टेट्स झगड़ रहे एक दूसरे के साथ, तो केस कहाँ पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा. It has complete power to give judgment regarding the fights and quarrels between the states and states. Okay, दो स्टेट एक दूसरे के साथ या ग्रुप, two states on one side and one state on another side, if they are fighting on some issue, then the case can go directly to Supreme Court. That is called original jurisdiction. Fourth is the Supreme Court has the right to give judgment concerning any set of union government or constitutionality. Yes, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अगर कोई प्रॉब्लम हो या उसको समझने में, फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम हो, then a case will go directly to the Supreme Court. Fifth, it has power to protect and preserve the fundamental rights of the citizen of India. Moreover, it is empowered to issue habeas corpus, mandamus or order of prohibition. See now, what is habeas corpus? It is a body to produce a body. Okay, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और नई बॉडी, किसी बॉडी इन द सेंस नॉट अ ह्यूमन बॉडी, ओके, टू फॉर्म अ कमिटी, टू फॉर्म अ बॉडी जो इसकी सब केसेस का इसका सब ध्यान रखेगा, then that power is with the Supreme Court. It is not in the jurisdiction of Supreme Court to settle the dispute related to distribution of river water between states or states. If you are able to understand this is one state. Okay, here there are plural, this is singular, मतलब two states on one side, one on single side. Over here singular, plural, एक state
दूसरे 2 स्टेट्स के साथ झगड़ रहा है. ओके, एंड लास्ट स्टेट्स, ग्रुप ऑफ स्टेट्स आर फाइटिंग विद ग्रुप ऑफ स्टेट्स. A separate water tribunal gives judgment. The judgment of the Supreme Court is final and it cannot be challenged anywhere. They have to be respected by all. That is called ओरिजिनल जुडिक्शन, बट इसमें वाटर डिस्प्यूट इंक्लूड होते हैं नहीं. सेकेंड कम्स एपीलेट जुडिक्शन. वहाँ पे है 3 टाइप्स ऑफ अपील्स कैन बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर द एपीलेट जुडिक्शन. नाउ विच आर दिस 3 टाइप्स ऑफ अपील्स? फर्स्ट इज केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए कोई नया लॉ बनाया गया है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बंद बैठता है नहीं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है उस हिसाब से वो कुछ गलत है, देन it will go under the appellate jurisdiction. Second is appeal against the civil cases, and third is appeal against the criminal cases. Now comes first. Any person can approach the Supreme Court against the judgment, order or right given by the High Court of any case only if a certificate is issued by High Court along with the judgment that the case involves a matter pertaining to the Constitution which has been falsely interpreted or contains any important question of law. Hence the petitioner can appeal in Supreme Court for the same. See ना, हम हर बार बोलते कि હવે અમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરશું. ઓકે, પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરશું પણ તમારો કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જશે કે નહીં એ ડિસાઇડ કેવી રીતે થશે? ઇફ અ સર્ટિફિકેટ ઇઝ ઇશ્યુડ બાય હાઈ કોર્ટ. अगर हाई कोर्ट को लगता है समथिंग इज रॉन्ग और देर इज सम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, देन दे कैन इशू अ सर्टिफिकेट दैट दिस केस मस्ट बी फॉरवर्डेड टू सुप्रीम कोर्ट. इफ एनी सच certificate is not given by the High Court and if the petitioner approaches the Supreme Court, then in such circumstances, if the Supreme Court finds that the constitutional right is violated, then it can accept the petitioner appeal. देखो हाई कोर्ट ने तो हाँ नहीं बोला है, फिर भी अगर पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पहले उस केस को देखेगा कि अगर कुछ उनको लगता है कि हाँ उनकी राइट्स वायलेट हुई है, then Supreme Court will accept the case, otherwise it will reject the case that whatever judgment given by High Court is right. But if in any of the circumstances only the petitioner who is a party in the working of High Court can approach the Supreme Court only under the reason that the false judgment is issued by High Court or any other court. See now what is this? In any circumstances only the petitioner who is a party in the working of High Court. Okay, High Court में वर्क कर रहा है और वो उसके साथ कुछ गलत हुआ है, then only on the reason that the false judgment is issued, वो तभी वो हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. In case of civil cases, if a high court certifies that the case involves important question of interpretation of law and the case holds general importance and it is necessary that the Supreme Court decides that an appeal can be made in Supreme Court, judgment of any civil cases involving sum of rupees 1 lakh or more can be challenged in Supreme Court. Now see what are civil cases related to civil, मतलब people से related जो केस हो वो, तो वो कब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? इफ एट ऑल द जजमेंट ऑफ सिविल कोर्ट इन्वॉल्व सम ऑफ रुपीज 1 lakh और मोर कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ एट ऑल यू आर वर्किंग इन, मान लो किसी फैक्ट्री में किसी में काम कर रहे हो एंड यू आर विदाउट पेइंग योर 4-5 years सैलरी आपको कंपनी ने निकाल दिया है, आपके यहाँ पे लाखों रुपए अटक गए. ओके, इफ एट ऑल द अमाउंट इज एक्सीड्स रुपीज 1 lakh एंड मोर एंड इफ एट ऑल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट थिंग्स, तो आपका केस सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड हो सकता है. दीज आर द सिविल केसेस. ओके, नेक्स्ट कम्स in case of criminal cases, if any court has acquitted the criminal for capital punishment and in that case High Court has given capital punishment to the criminal, then in such circumstances an appeal can be made in Supreme Court. Supreme Court can review its own judgment. It can transfer cases that are going on in other courts of Supreme Court. The Parliament can increase the powers of Supreme Court by framing act. See now what is capital punishment? Capital punishment का होता है डेथ सेंटेंस. ओके, अगर आपको फांसी की सज़ा दी गई है तो, और लोअर कोर्ट ने आपको फांसी की सज़ा दी है, दैन इट विल गेट ट्रांसफर टू हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी वो सज़ा वैसी की वैसी रखी है, दैन यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. ओके,
सो फॉर एनी कैपिटल पनिशमेंट वन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, और उनके पास पावर्स भी होते हैं कि वो नया एक्ट बना सके. सो नेक्स्ट कम्स, जस्ट अ सेकेंड. Okay, so we'll stop over here. Today we have learned about the Indian judiciary, the function of judiciary system and how it function, and the first, that is original jurisdiction or appellate jurisdiction. ये दो हमने पढ़े हैं. Okay, third comes advisory jurisdiction, that we'll study later. Thank you.